So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss the weekly current affairs for first week, June 2025. So I hope you all are aware that okay, I think I'm audible, visible now. There were some tech issues. So let us begin. थोड़ा सा कुछ issue हो गया था. I don't know what happened. So first of all, this is the June first week. We are today discussing the June first week current affairs at 3 p.m. And actually, we are discussing this since January. So we have converted from January to May also in 4 parts. Of course, every month is covered under 4 weeks. I mean, there are 4 weeks in 1 month. So we have covered the previous ones also. So if you are interested to watch since January, I would suggest go to the playlist. Okay, scroll down. You will find this weekly current affairs in the playlist section of our YouTube channel. First of all, please subscribe to it. If you have not subscribed yet, please subscribe to our channel. Okay, and go to the playlist. Here you will find this playlist. इसमें नीचे में लिखा view full playlist. So click on that and you will get the entire series. So this is from January month. I have covered till now. Okay, so go and watch it because of course that would be helpful in covering the backlogs. And many people ask me, sir, पीछे का कहाँ से cover करें backlogs? So that is what it is. Okay, let us begin with today's class. So I'll be discussing this with the help of the question and answer. So the first question is Novak Djokovic. I'm sure you must have heard his name. A very famous lawn tennis player. He has won his 100th single title at which tournament recently? So Novak Djokovic is associated with lawn tennis. See, actually in India, only everyone knows only about cricket, but in exams sometimes they ask questions from lawn tennis and other sports also. Okay, so you should know it. Okay, so what is the right answer? Please tell me. I'm waiting for the response. The right answer is option B. Anna, that is Geneva Open. Yes, Harsh Sharma, you are right. B is the right answer. Geneva Open is the right answer to this question. Anna. Okay, आप देख सकते हो ना. This is 25th May news, है ना, last week of May में, है ना. So 100th career single title, है ना, by defeating Hubert Hurkacz. And before him, there were other people also, like Jimmy Connor had got 109 single title. Roger Federer has got 103 title, है ना, and he's perhaps the third one. Okay, let's move on to the next one. What is the name of the first FM radio station launched by Indian Army or operated by Indian Army in the state of Uttarakhand? Your options are Sadbhavna Vani, Himalayan Eco, Panchul Pulse, Veer Varta. What is the right answer to this question? Please tell me what is the right answer. FM radio means frequency modulation. देखो एक AM और FM radio दो तरह का होता है ना? But AM radio is nowadays, I think, redundant. FM radio is still there. Although generally new generation do not know much about radio because it is now an obsolete technology. But still you should be knowing a little bit. Yes, the right answer here is Panchul Pulse. C is the right answer. Yes, Harsh Sharma, you are right. Yes, very good. And inaugurated first FM radio station at Panchul Pulse in Pithoragarh district of Uttarakhand, है ना, under Operation Sadbhavna. Yes, and it is 88.4 FM पर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है? Yes, Operation Sadbhavna के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा. This is a mission of this is an operation done by Indian military. Sadbhavna भी छोड़िए, है ना. So this is actually the idea is to gain goodwill and trust among the local community. Goodwill and trust among the local community. I am from Haridwar, Uttarakhand. Oh, Harsh. So then you are knowing about that. Oh, great. Okay. But otherwise, generally people are not much aware of radio station, etc.
है ना. If you are from Uttarakhand, then it's great, you know it. Otherwise, कम chance है, but still you should be knowing it, है ना, because it was in the news, and of course there can be a question. ठीक है. The next is, which of the following institute is developed by Bharat forecast system? Is developed as, actually which of the following institute developed as the Bharat, नहीं, which of the following institute has developed होना चाहिए actually. हाँ, अब सही है. ठीक है. Actually क्या, you have to understand, Bharat forecast system will help us. This is a newer system which will help us find about forecasting weather forecasting, understand, है ना. मौसम का को प्रिडिक्ट करना है ना, predicting the, let's say, monsoon, cyclone, or predicting the weather, that's called as forecast system, है ना, कि पहले बताना कि आज का मौसम कैसा रहेगा, है ना, बारिश होगी नहीं होगी, साइक्लोन आएगा नहीं आएगा, बहुत सारी चीज, है ना. So basically, yes, Sharma, you're right. Actually, IITM, Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, actually has made this Bharat forecast system. ठीक है, इन्होंने बनाया है. Okay, but once it has been made, it will be used by IMD. ठीक है. Indian Meteorological Department, actually this year it has completed its 150 year also. Indian Meteorological Department का 150 साल भी पूरा हुआ है ना. So that's why it becomes important. So Indian Meteorological Department है, it is under Ministry of Earth Sciences. Okay, इनका काम होता है weather prediction या वही weather forecasting. ठीक है, मतलब कि पहले बता देना कि वेदर जो है वो कैसा रहेगा, है ना. दैट्स द वेदर फोरकास्टिंग. तो आपने देखा होगा जब भी साइक्लोन्स वगैरह आते हैं ना, खास करके व्हेनेवर यू विल सी साइक्लोन्स, तब ये आईएमडी वगैरह कई बार न्यूज में रहता है कि आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया था ये साइक्लोन एटसेट्रा एंड ऑल. तो जस्ट रिमेंबर अबाउट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आल्सो. सो दे विल बी यूजिंग इट टू प्रेडिक्ट द मानसून. ठीक है, और इसको डेवलप किया है आईआईटीएम पुणे ने. ठीक है, ओके. आई रेड इन ज्योग्राफी, गुड शर्मा, वेरी गुड. लेट्स मूव ऑन, है ना. अगर आप देख सकते हो, आप ये भारत फोरकास्ट सिस्टम की वेबसाइट पर, विकिपीडिया पर भी है. 26 मई 2025 को लॉन्च हुआ था आईआईटीएम, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. इट इज एन इंडियन एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली. तो आईएमडी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है ना. लेट्स मूव ऑन फर्दर. What is the name of the building whose foundation stone was laid down by Home Minister Mr. Amit Shah at the National Cancer Institute, Nagpur? Sauraksha Nivas, Swasti Nivas, Ayush Nivas, Shanti Nivas. नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया था गृह मंत्री जी के द्वारा. उस बिल्डिंग का नाम बताना. नागपुर में. नागपुर इज एक्चुअली अ प्लेस इन महाराष्ट्र. सो व्हाट इज द राइट आंसर? The right answer is option B, है ना. स्वास्थ्य निवास is the right answer to this question. Okay, स्वास्थ्य निवास इसका नाम है. ठीक है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट नागपुर. ठीक है, just remember it. Performs भूमि पूजन means it is a inauguration procedure through religious means, है ना. That is what you should know. The next is, where is the University of Liverpool opening its first Indian campus? आपने नाम सुना होगा, लिवरपूल इंग्लैंड की में जगह है. It's a very famous place, है ना. एंड दोज हु आर फुटबॉल लवर, दे शुड नो दैट लिवरपूल जो है वो इंग्लिश प्रीमियर लीग की एक फुटबॉल टीम भी है ना. सो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल इज ओपनिंग इट्स फर्स्ट इंडियन कैंपस वेयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बैंगलोर. ठीक है, yes, Harsh Sharma, very good, you're right. Bangalore campus of University of Liverpool to be start operation from September 2026, है ना. So that is what you should know. So the right answer is C. Let's move on to the next one. Who is the newly elected president of Romania? Romania is a country in Europe. Bucharest is its capital, है ना. Newly elected president कौन है? Ili Bulojan, George Simeon, Nicosar Dan, Klaus Ioannis. What is the right answer to this question? The right answer is option C, Nicosar Dan. C is the right answer to this question. Romanian Liberal Mayor Nicosar Dan wins the race. So where is India? This is Europe. और यूरोप में रोमानिया है ना. रोमानिया कैपिटल क्या है? बुचारेस्ट.
ठीक है. Okay, let's move on. How much investment has been proposed during Rising Northeast Investors Summit 2025? So this summit was done in Delhi, where PM Modi was also invited, है ना? So Rising Northeast Investors, Northeast इस region को कहते हैं, आपको पता होगा, है ना? This region of India is called as Northeast. So basically, a summit or a program was done in Delhi for investors, so that the big investors can come and invest in Northeast. इन्वेस्टर समझते हो ना, जो बड़े बिग बिजनेसमैन, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो इन्वेस्ट करते हैं अपना, जैसे कोई शेयर लगाएंगे, कोई कंपनी खोलेंगे, कोई रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, समथिंग लाइक दैट, है ना? दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. सो कितना अमाउंट की बात हुई है? 4 लाख करोड़, है ना? सो सी इज द राइट आंसर, 4 लाख करोड़. ठीक है. सो ओवर 4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल राइजिंग नॉर्थ ईस्ट, है ना? ये सबमिट हुआ था टू प्रमोट नॉर्थ ईस्ट. अच्छा, इसके लिए एक स्पेशल मिनिस्ट्री बनाई गई, कहते हैं डोनर मिनिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. दिस इज अ मिनिस्ट्री, डोनर मिनिस्ट्री कहते हैं. एंड हु इज द मिनिस्टर? सो मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इज द मिनिस्टर ऑफ दैट. डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. ठीक है. Okay, let's move on to the next one. In which country did President Nicolas Maduro's party win 23 out of 24 governors position in an election? अभी मैंने कुछ दिन पहले, few days back, I had taken a class on this crisis in Latin America. उसमें मैंने इसको डिस्कस भी कराया था. So on our YouTube channel, live section पे जाओगे, just scroll down, you will find this video, crisis in Latin American countries. उसमें मैंने डिस्कस भी कराया था. And Nicolas Maduro is actually from Venezuela. And so C is the right answer to this question. I have discussed in detail Venezuela and all that. Nicolas Maduro wins landslide election. है ना? So C is the right answer to this question. ठीक है. ये crisis in Latin America वाली class देख लीजिएगा. That would be helpful. Okay. है ना? And 2013 से is the president. And crisis क्यों? Economic crisis is there, which I have discussed in that class. And it has witnessed hyperinflation and many other problems. Okay. So here is India. This is Venezuela. And the capital of Venezuela is Caracas. ठीक है. ये South America continent है. This is South America continent. Okay. Let's move on to the next one. Which of the following railway corporation is being merged with Indian Railways? मतलब ये थोड़ा सा अलग थे, अब they have decided to become the part of Indian Railways. I'll give you a hint. When you travel from Mumbai to Goa, you will find this. You will be in that railway zone. अगर आप मुंबई से गोवा जाने का कभी मौका मिले, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी नियर वेस्टर्न घाट, यू विल फाइंड, है ना? तो दैट्स कॉल्ड एज कोंकण रेलवेज. सी इज द राइट आंसर. यस हरी, यू आर राइट. सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लास्ट मंथ ऑफिशियली एग्री टू मर्ज कोंकण रेलवेज विद इंडियन रेलवेज. ठीक है. सो कोंकण रेलवेज को 1990s में बनाया गया था. स्पेशल पर्पस व्हीकल मींस सेपरेटली एक बनाया गया था स्पेशली फॉर दैट पर्पस, है ना? सो दैट देयर कैन बी रेलवेज इन वेस्टर्न घाट्स. ठीक है. सो ये वाला रीजन को वेस्टर्न घाट कहते हैं ना. ठीक है. Okay, let's move on to the next one. The gene editing technology used by SCOST means Sher Kashmir University of Agriculture, Science and Technology, that has created first gene edited sheep is what? ये मैंने कई बार डिस्कशन कराया है, and I have told you that 2020 I think they had won Nobel Prize also in this field. Very famous gene editing tool. हालांकि चारों more or less जो ABC तो बिल्कुल यूज किया था, है ना? All four are something related with biotechnology, but gene editing tool के लिए specific जो most famous one है वो है CRISPR-Cas9. C is the right answer to this question, है ना? 2020 chemistry Nobel Prize for developing CRISPR-Cas9's genetic scissor, है ना? This was given to Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna. Please remember it because sometimes they are asking old Nobel prizes 4-5 years back, उसका भी उठा के पूछ रहे हैं. ठीक है. India's first gene edited sheep. ठीक है. So the right answer is C is the right answer. Yes, Harsh Sharma, you are right.
लेट्स मूव ऑन, है ना. आप देखो यही है, दिस वन, द जीन एडिटेड शीप. ओके, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. क्रिस्पर का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिट्रोमिक रिपीट्स कैस्टाइन. इसको ना बायोलॉजिकल सीजर भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, ये सब टर्म लिखा आता है. बायोलॉजिकल सीजर या जेनेटिक सीजर, दीज ऑल आर नथिंग बट क्रिस्पर कैस्टाइन. ठीक है, मतलब ये आप समझ, जैसे मान लो कि जैसे ये डीएनए है, ठीक है, और उसके कोडिफाइड पोर्शन को ही जीन कहते हैं. तो मान लीजिए हमको ये वाला पोर्शन काट के हटाना है, तो इसको काट के हटा दिया, दूसरा ऐड कर दिया. So I remove that portion of DNA and added something else. So when I cut it, I will use the tool CRISPR-Cas9 to cut, remove, and add something. Okay. Yes, Hari. This can be asked if you see CLAT 2023 का पेपर देखोगे. There were questions on science and technology. ठीक है, और प्योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पूछे थे 2023 में. तो उन्होंने एक बार क्या किया था कि 2020 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स पर क्वेश्चन पूछा था. Then they had asked question on बहुत सारे साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे. ठीक है, तो ऑफ कोर्स यू विल थिंक कि सर ये तो क्लैट में नहीं आएगा, बट नहीं. इफ थिंग्स आर इन द न्यूज़पेपर्स कमिंग इन अगेन एंड अगेन, ऑफ कोर्स इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इवन इसरो, नाविक, ये सभी क्वेश्चन आया है. सो ऑफ कोर्स इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट. ठीक है. द नेक्स्ट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो recently became the first player to score how many club goals. क्लब वाला मैच होता है ना, जो मतलब इंटरनेशनल मैच, जो क्लब मैचेस होते हैं, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कितने गोल्स अभी तक टारगेट मतलब अचीव कर लिया है, इतने नंबर ऑफ गोल्स. और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहां से बिलोंग करते हैं, कौन से कंट्री से? विच कंट्री क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलोंग्स टू? So the right answer is B, 800 goal, है ना. It has scored 8. He has scored 800 goals, and he's actually from Portugal. ठीक है, पोर्चुगल यूरोप में एक कंट्री है. The next is International Day of UN Peacekeepers is observed on which date? हाँ, पोर्चुगल के. यस शर्मा, यू आर राइट. हाँ, ये यूएन पीस कीपर्स एक फोर्स होता है, उसको कहते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स. ठीक है, यही होते हैं. इनको ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं बिकॉज दे वियर ब्लू हेलमेट्स, सो दे आर कॉल्ड एज ब्लू हेलमेट्स. सो यूएन पीस कीपर्स आर एक्चुअली कंट्रीब्यूशन बाय मेनी डिफरेंट कंट्रीज, है ना. सो इंडिया आल्सो कंट्रीब्यूट्स देयर इट्स पुलिस एंड मिलिट्री पर्सनल फॉर दैट. Yes, 29th May को C is the right answer to this question. So 29th May is observed as UN Peacekeepers Day. ठीक है, ठीक है, International Day of UN Peacekeepers. C is the right answer. The next is who won 2025 Monaco Grand Prix Formula 1 race? Actually पता है क्या है, इसको ग्रैंड प्रिक्स लिखते हैं, लेकिन आई थिंक फ्रेंच वर्ड है, तो ग्रॉ प्रिक करके प्री करके पढ़ते हैं इसको. और ऑफ कोर्स नोबडी विल अंडरस्टैंड इफ आई से ग्रॉ प्री. ठीक है, सो बेसिकली फार्मूला 1 वगैरह जनरली जो होता है ना टर्म, ये कार रेस एसोसिएटेड होता है. फार्मूला 1, फार्मूला 2. ओके, सो किसने जीता है, ये मैं फोटो इसलिए लगा दी ताकि आप समझ लो कि ये सब कार रेस से एसोसिएट होता है. जो मोटो जीपी लिखा होता है वो सब जो होता है बाइक रेस होता है ना. और फार्मूला 1 ये सब जो होता है कार रेस होता है. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड इट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लैंडो नॉरिस, है ना. C is the right answer to this question. ठीक है, आप देख सकते हो, you can see. Let's move on to the next one. What is the DGPIN initiative primarily aimed at? Yes, C answer था. Yes, Harsh Sharma, you were right. हाँ, DGPIN. अब देखो नाम में ही छुपा है सब कुछ. DGPIN, पीछे काटो, digital. So sometimes the name itself will tell you PIN. अब देखो डिजिटल पिन, थोड़ा सा अगर आप एक्सपैंड करोगे, आपने ये पिन कोड पढ़ा है? I mean, I'm sure you must be aware, like when you want to send something to post, you need to give postal address. उसमें पिन कोड डालते होगे, है ना. Yes, Harsh, very good. B is the right answer. Digital address system. उसमें आप पिन कोड डालते होगे, या अगर आप कभी ई-कॉमर्स वेबसाइट से कुछ खरीदते हो तो भी आप पिन कोड डालते होगे, so that it will be delivered at the right position, है ना, right address. So digital addressing system का कॉन्सेप्ट हो गया ना. डिजिटल पिन कोड का एड्रेस से लेना देना है ना.
सो डिजिटल एड्रेस बी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे ना कभी कभी कोशिश करना कि अगर आपने नहीं पढ़ा हो डीजीपिन के बारे में तो भी आप कुछ ट्राई करो तोड़ के ब्रेक करके कि अच्छा हाँ इसमें से कुछ माने निकल रहा है. ठीक है, सो ट्राई टू डू दैट, है ना. इट इज एन ओपन सोर्स नेशन वाइड जियो कोडेड, है ना, एड्रेस सिस्टम डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, है ना, इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी हैदराबाद एनआरएससी इसरो. ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. you'll get an idea कि जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन का. ठीक है, तो आसान होगा एड्रेस डिलीवर करना जो भी प्रोडक्ट है. दैट इज द आइडिया. इंडिया पोस्ट ने डेवलप किया है, मतलब इंडिया पोस्ट के लिए इन लोगों ने डेवलप किया है. Let's move on to the next one. Which of the following states accounted for highest FDI inflows in fiscal year 2024-25? देखो लिखा ना FY 24-25, क्या मतलब हुआ इसका? फिस्कल ईयर 2024-2025. इट मींस 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक. ओके, हाईएस्ट एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. हाउ मच लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया. सो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इज महाराष्ट्र स्टेट. ठीक है, सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, आप देख सकते हो महाराष्ट्र अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट. एंड कहां से आए सोर्स? सो लार्जेस्ट इज फ्रॉम सिंगापुर, देन फ्रॉम मॉरिशस एंड देन फ्रॉम यूएसए. तो लार्जेस्ट पूछते हैं. ठीक है, सो लार्जेस्ट रिसीवर एज फार एज द स्टेट इज कंसर्न्ड इज महाराष्ट्र, एंड लार्जेस्ट सेंडर एफडीआई रेमिटेंस सेंडर इज एक्चुअली सिंगापुर, है ना. सोर्स कंट्री जिसको कहेंगे, लार्जेस्ट सोर्स, है ना. So state wise largest receiver is Maharashtra, and when it comes to source, the largest country, the largest amount we are getting it from Singapore, then Mauritius and US. But ये याद रखना, number 1, 30%. Let's move on to the next one. What is the name of India's indigenous? Indigenous मतलब क्या होता है? Made in India, देसी. नहीं, we have not imported from someone else, somewhere else. We are actually making it in our own country. 2-seater electric trainer aircraft. ट्रेनर एयरक्राफ्ट आपने देखा होगा कई बार, है ना, जो पायलट जब लर्न करते हैं तो शुरू में वही ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर, है ना. सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ई हांसा, राइट, है ना. इट इज एन इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय CSIR NAL अंडर हांसा 3, है ना. वर्थ ₹2 करोड़ ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट आप देख सकते हो. CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी इन बेंगलुरु. ठीक है, ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. Yes, Siddhi, which you are right. C is the right answer. Yes, let's move on. Where is India's first private helicopter final assembly line being established? So ये helicopter है, I think H125 है इसका मॉडल, है ना, which is made by Airbus. Airbus है यूरोप की कंपनी, headquartered in France, है ना, फ्रेंच कंपनी एक तरह से, फ्रेंच नेदरलैंड में लोग का हेडक्वार्टर है एयरबस. देखो दो बहुत फेमस कंपनी एयरलाइन बनाने के लिए, दो देयर आर मेनी कंपनीज. वन इज बोइंग फ्रॉम यूएसए and the other one is Airbus from, you can say, Europe कह सकते हो. So its headquarters in France and Netherlands, etc. So these two are very famous airline making companies, जो हवाई जहाज या like those who manufacture aeroplane और helicopters. ठीक है, तो इनका जो है प्राइवेट असेंबली लाइन डी कोलार में बनने जा रहा है ना. कोलार इज एक्चुअली प्लेस इन कर्नाटका. एंड H125 हेलीकॉप्टर का मॉडल है. एंड यस, ऑफ कोर्स टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, यानी टाटा से भी इनका टाई अप होगा. ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, दिस इज H125, है ना. द नेक्स्ट इज द ओल्डेस्ट व्हेल बोन टूल्स recently dated were found in which region? Arctic, Bay of Bengal, Bay of Biscay, South Pacific. What is the right answer? मतलब बहुत पुराना ये, उसमें वेल की हड्डी से वो लोग टूल्स बनाते थे उस जमाने में, ऑलमोस्ट आई थिंक 20,000 years बैक. सो कहाँ मिला है वो वेल? यू अंडरस्टैंड? इट इज नॉट अ फिश, इट इज कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट मैमल. सो बे ऑफ बिस्के में सी इज द राइट आंसर. और ये यूरोप में जगह है ना. तो ये जो टूल देख रहे हो, दिस टूल इज एक्चुअली मेड फ्रॉम द बोन्स ऑफ वेल. 20,000 साल पुरानी बात है.
जब व्हील जो मर जाता होगा, कुछ होगा, उसमें से हड्डी निकलता होगा, उसमें से दे यूज्ड टू मेक. ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इस ऑफ बे ऑफ बिस्के. तो यहाँ पर इंडिया है, दिस इज यूरोप. यहाँ पे आप फ्रांस देख रहे हो, स्पेन देख रहे हो. यहाँ पे जो वाटर बॉडी है इसको कहते हैं बे ऑफ बिस्के. ये बे ऑफ बिस्के. सो इस वाटर बॉडी में मिला है 20,000 years old. So it means 20,000 years old humans used to live, where they used to make weapons or tools with the help of the dead whales bones. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. Let's move on. What is the aim of Sivoke Rangpo rail project? ये को बता सकते हैं? Anyone? Yes, B is the right answer. Yes, Sharma, you are right. To link Sikkim with India's rail network, B is the right answer. B सही आंसर. ठीक है ना, मैं दिखाता हूँ. देखो, अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल, if you want to go to Darjeeling, Darjeeling is a very nice place, tourist place to visit. So the nearest railway station is New Jalpaiguri. अगर आपको कभी दार्जिलिंग घूमने का शौक हो तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी जाना है, अगर आप ट्रेन से जाओगे तो. एंड फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी यू हैव टू गो टू दार्जिलिंग वाया बस और रोडवेज मींस. ठीक है, रोड से जाना होगा. तो जैसे अगर ट्रेन जो है ऐसे आती है, मान लो इधर से पटना से बिहार से ऐसे आती है, इट गोज लाइक दिस, देन इट गोज टू असम में जाती है, जैसे गुवाहाटी वगैरह ट्रेन जाती है. बट ऊपर की तरफ सिक्किम की साइड में ट्रेन नहीं है, सो यहाँ पर ट्रेन बिछाई जाएगी, मींस ट्रैक शुड बी देयर. ठीक है, सो करेंटली दिस इज द रेलवे रूट. We don't have line connecting New Jalpaiguri with Sikkim. This railway line is being proposed, है ना? So it will go like this. So that is the idea. ठीक है, New Jalpaiguri, say it will be connecting to near Siliguri, etc. So that is the idea. This is the project, Sivoke Rangpo railway line. ठीक है, something like this. It will go something like this, है ना? So this is a proposed railway route, है ना? And the main reason is why the railway line is not there, because of course there are there are mountainous regions, है ना, rough terrains, तो making railways are slightly difficult. ठीक है, तो ये वाला भी already existing है ना. इधर से जाती है गुवाहाटी होके, गुवाहाटी इज इन असम, तो बस ये रूट से जाती है ना. To be linked by railway line by 2027. That is what the proposal is. Let's move on. Name the former tennis player who has been awarded Prince of Asturias for Sports Awards 2025. What is the right answer? Prince of Asturias is an award given from Spain. The right answer is option A, Serena Williams. Yes, now Siddhi, you are right, huh? So Serena Williams wins Prince of Austria's awards for sports. है ना, यही पूछा सकता है कहां से दिया जाता है, so you should remember from Spain. The next is, which of the following immune cells were found to play a dominant role in malaria immunity? पहले आप समझते, you understand what is immunity? देखो, जैसे मान लिया ह्यूमन है, this is a human, okay? I'm just making a rough sketch. If a virus or an external pathogen attacks, कोई बीमारी जब अटैक करती है, इसको बीमारी समझ लो, disease attacks, let's say in simple word. So our body fights inside the body, body के अंदर फाइट करती है जो भी डिजीज या एक्सटर्नल पैथोजन आते हैं. इस फाइटिंग कैपेसिटी को इम्यूनिटी कहते हैं ना. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स. WBCs का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्यूनिटी में, यानी जो एक्सटर्नल पैथोजेंस या डिजीज कॉजिंग सब्सटेंस जब अटैक करता है तो उसको फाइट करने में WBCs का रोल होता है. आई होप यू आर अवेयर, इतना भी जानते होंगे. तो TR1 सेल्स जनरेट होता है. ऐसा देखा गया कि जब मलेरिया अटैक होता है, so whenever there is a scope of that, then TR1 cells gets generated in the body to fight the malaria. ठीक है, yes Tarushi, you are right, C is the right answer. Sharma right, हाँ. So ये है TR1 cells, that is what you should know. Immune response उसको कहते हैं, है ना. Immune response means the body is generating immune response. It is creating antibody to fight the external pathogen or the disease causing substance that is coming into our body. Let's move on to the next one. Who has recently been appointed as chairman of Indigo? Indigo Airlines काफी famous है. I think this is the only airline which is profitable, because generally airline companies are in loss.
but as far as my knowledge is concerned, this is perhaps the only one which is profitable airline company in India. बताइए नए चेयरमैन कौन बनाया गया है? The right answer is C is the right answer, है ना, विक्रम सिंह मेहता, by replacing Venkat Ramani Somantran. So C is the right answer. Yes. Okay. Yes, Tarushi, Siddhi, Harsh, you all are right. The next is what makes Diu in India notable in the context of renewable energy. Diu is an island. ना देखो एक यूनियन टेरिटरी, इसका नाम है बहुत लंबा चौड़ा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. दिस इज नाउ वन यूनियन टेरिटरी. उसी का एक हिस्सा है दीव, which is an island just south of Gujarat. You will find. So what is special about this? Yes, Harsh Sharma, right. First district with 100% solar power usage. Yes, Siddhi, which Tarushi, you all are right, है ना. तो यहाँ पर एकदम गुजरात के साउथ में एक आइलैंड है. आपको लगेगा नहीं, जब जूम करोगे तो पता चलेगा इट इज एन आइलैंड. ठीक है, मतलब क्या, देखो, यूजिंग सोलर एनर्जी इज अ पॉजिटिव थिंग बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, राइट. तो इनके यहाँ जितने भी नीड्स इस आइलैंड में सब जो है वो सोलर से ही काम चल रहा है. मींस दे आर यूजिंग सोलर पैनल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल द हाउसेस और व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, शॉप्स एटसेट्रा. हर जगह सोलर एनर्जी से बिजली चल रही है पूरा. कोई भी एक जगह जो है वो कुछ और थर्मल या कोई और पावर नहीं यूज किया जा रहा है. ठीक है, दैट्स द आइडिया. सो ऑफ कोर्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट इज, हाँ ये हो गया. द नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वेर ग्रांटेड मेरी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस रिसेंटली. देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं PSU या PSE कहते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. ओके, so basically it means mostly it is having 51% गवर्नमेंट का शेयर होता है, 49% प्राइवेट शेयर होता है. ठीक है, सो बेसिकली मतलब कहने का ये मतलब है कि इसमें मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट का होता है, उसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्राइवेट शेयर्स भी होते हैं. तो PSUs को जनरली या PSEs को जनरली 3 फेमस कैटेगरी में दिया जाता है ना. एक मिनी रत्ना स्टेटस दिया जाता है, one is नवरत्ना स्टेटस एंड अनदर इज महारत्ना स्टेटस. दीज आर जनरली फेमस ones which are given, है ना. इसके कुछ like there are some eligibility criteria for that, but I'm not going in that detail. खैर, तो अभी रिसेंटली AVNL, MIL और IOL को दिया गया ना. सो B इज द राइट आंसर. AVNL मतलब आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, IOL मतलब इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड एंड म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड. दीज 3 हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ मिनी रत्ना कंपनी. ओके, सो ये डिफेंस PSUs है. डिफेंस PSUs मतलब DPSU मतलब इट इज दिस पब्लिक सेक्टर यूनिट इज मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स रिलेटेड विद डिफेंस टेक्नोलॉजी, है ना. नाम से ही पता चला, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, नहीं आर्मर्ड व्हीकल बनाती होगी, समथिंग लाइक दैट. म्यूनिशंस इंडिया, है ना, गोला बारूद समथिंग कुछ बनाती होगी. मतलब बहुत बार नाम से ही आपको बहुत कुछ पता चल जाता है ना. दैट इज व्हाट यू शुड नो. तो अगर इफ यू वांट टू नो what is the difference between these 3 companies, then you can search more about it in detail, है ना. The next is what does SEPA stands for in the India-Chile agreement. Basically, Chile and India is planning or proposing for having a agreement, India-Chile agreement, which is called as SEPA. We have already signed SEPA with UAE and other countries as well. What is the full form of SEPA? Option A, Comprehensive Economic Partnership Agreement, is the right answer. Yes, Tarushi, right? Huh? India and Chile are currently negotiating Comprehensive Economic Partnership Agreement. Okay, A is the right answer. Na? Here is India, this is Chile, and its capital is Santiago. Okay, A is the right answer to this question. The next is what is the face value of the commemorative coin released in honor of Ahilya by Holkar? Rupees 100, 250, 300, 500. What is the right answer to this question? Yes, 300 rupees. C is the right answer. Anna. PM Modi unveiled 300 rupee coins on her 300th birthday. Okay. Yes, Tarushi and Harsh and Siddhi Viji, you all are right. Very good. The next is which of the following football club recently won UEFA Champions League? ये यूरोप में होता है.
फुटबॉल का, जैसे आईपीएल कैसे इंडिया में होता है क्रिकेट के लिए, है ना, समथिंग सिमिलर टू दैट यूएफए चैंपियंस लीग इज रिलेटेड विद फुटबॉल मैचेस, है ना, लीग फुटबॉल मैचेस इन यूरोप. किसने जीता है? The right answer is C. Paris Saint-Germain is the right answer. ठीक है. Wins Champions League title for the first time. Yes, Harsh Siddhi, you are right. C is the right answer. Yes. Why is the Mars launch window in 2026 significant for Musk's Starship mission? What is the right answer? देखो इसमें पूछा ही जा रहा है Elon Musk. Elon Musk is planning to send Starship mission to Mars. ठीक है. So, but why is planning in 2026? What is so special? Yes, Harsh, very good. Tarushi, हाँ. फेवरेबल अलाइनमेंट ऑफ अर्थ एंड मार्स. तो आपको पता होगा, देखो होता क्या है कि जैसे अर्थ जो एलिप्टिकल मूव करता है, मार्स का भी अपना मूवमेंट होता है. कभी कभी ऐसा होता है जो अर्थ और मार्स बहुत क्लोज हो जाएगा. ठीक है. सो ये जो है ना 2026 में 2026 अर्थ एंड मार्स वुड बी क्वाइट क्लोज, सो इट विल बी इजी टू सेंड द मिशन, है ना. स्पेस एक्स के फाउंडर है, आई होप यू आर अवेयर, एलॉन मस्क इज द फाउंडर ऑफ स्पेस एक्स, वेरी फेमस यूएस प्राइवेट स्पेस एजेंसी. ठीक है. तो जब वही लिखा है ना क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में होगा. So when of course things are, when the two planets are in closest proximity, if you send the mission you will require very less fuel, है ना. कोई चीज करीब होगा तो उसमें आपका जो भी फ्यूल होता है वो कम चलेगा, कम रिक्वायरमेंट होगा, है ना. So that is what the idea is and that is why he is planning for that, है ना. अर्थ मार्स ट्रांसफर विंडो कहते हैं सब टेक्निकल टर्म से, बट आप समझ गए होगे कि क्लोज होगा. दैट इज व्हाट द आइडिया इज, है ना. सो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो करीब होगा तो आसानी से भेजा जा सकता है ना. होफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट प्रिंसिपल होता है, लेकिन होफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट प्रिंसिपल, बट आई डोंट थिंक दे विल बी आस्किंग सो मच इन डिटेल. एक रफ आइडिया होना चाहिए. दैट इज व्हाट यू शुड नो. So this is all about today's class. Today I'll be meeting at 8 p.m. also, where I'll be discussing static GK. ठीक है. So please do join me at 8 p.m. So thank you everyone. Please subscribe to our channel, press the like button, share this video. Thanks for watching. Have a nice day.